today we will discuss about the divisibility test because divisibility test is very helpful to find out the LCM and HCF to see a number, how we can draw the number it is divisible by which number. Now I have written here one number 91,253. If I will ask you whether this number is divisible by 3 or not, तो ये नंबर 3 में डिविजिबल है कि नहीं हमने कैसे पता लगाएंगे? How we will know this number is divisible by 3 or not? In order to know this, we have to add the digits 9, 1, 2, 5, 3. I have written here 9, 1, 2, 5, 3. These are the digits in this number. Now I will add 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20. Okay? 20. If you need, again you can add this. This is 2 plus 0. 2. Your 20 is not coming in the multiplication table 3. 3 में 20 आता है क्या? नो सर। 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। तो ये 2 भी अगर इसको 2 बार भी ऐड कर देंगे 2 भी 3 का टेबल में नहीं आता है। तो it means this number is not divisible by 3. This number is not divisible by 3. ये नंबर 3 में divisible नहीं होगा। हमने डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर if I will divide this number, I will get some remainder. I will get some remainder. Now we can take this. कैसे 3 में डिवाइड करो? 3 3 जा 9, 1 0 2 12 3 4 जा 12 5 3 1 जा 3 2 3 3 7 जा 21. So here I got the remainder 2. So this number is not divisible by 3. So without dividing, we can check the number is divisible by 3 or not. Now you say 8103. It is divisible by 3 or not? It is divisible by 3 or not? यस सर। जैसे यहाँ पर 8103. Now 8 plus 1 9 3 12. 12 is divisible by 3. यस सर। 3 4 the 12. यस सर। So this number is also divisible by 3. This number is divisible by 3. So this is the process. How you can know the number is divisible by 3 or not? We adopt the same process to know the number is divisible by 9 or not. By 9. 9 में एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं जानने के लिए हमने यही प्रोसेस ही अपनाते हैं। यही प्रोसेस ही अपनाते हैं। The same process we adapt to know whether a number is divisible by 9 or 9, divisible by 9 or not. जैसे 78259. I have written this number. I want to know this number is divisible by 9 or not. Mind it, here the 1 plus digit is 9. It does not mean it will be divisible by 9. इसका 1 plus 9 है, कोई जरूरी नहीं कि ये 9 में divisible हो जाएगा। 9 में divisible है कि नहीं? To know this, I have to add the digits. 7, 8, 2, 5, 9. So what is the count? 7 plus 8, 15. 15 plus 2, 17. 17, 5. 22 plus 9. How much it is coming? 31. 31 is not coming in your table 9. 31 को 9 में डिवाइड करूँगा. 9 3 जा 27. Remainder is coming 4. Remainder is not coming 0. So this number is not divisible by
9. This number is not divisible by 9. Are you clear? Not divisible by 9. Now I want to know this number is divisible by 9 or not? 9 or Not. not? In order to know this, I will add this digit. 7, 2, 6, 3, 1, 1, 7. How much it is coming? 7 to 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 19, 20, 27. It is a sum is coming 27. So 27 is divisible by 9. 9 3 are 7. So remainder is coming 0. Means this is divisible by 9. Divisible by 9. Are you clear? Yes, sir. तो 3 में कैसे डिविजिबल होगा, 9 में डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे हमने पता लगाएंगे? Are you clear? Yes, sir. Okay. Now we will go for divisibility test for 4. Divisibility test for 4. 4 में एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं हमने कैसे चेक करेंगे? Suppose I have written this 7 1 0 5 7 1 8 3 4. I want to know this number is divisible by 4 or not. ये नंबर 4 में डिविजिबल है कि नहीं हमने कैसे पता लगाएंगे? तो इसको जानने के लिए हमने क्या करेंगे? ये फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. You take the first 2 digits from the right hand side and you write it separately. 34. Now you divide this by 4. 4 is 32. So remainder is coming 2. Remainder is not coming 0. Remainder 0 आ रहा है क्या? No, sir. No. So this number is not divisible by 4. So this number is not divisible by 4. This number is not divisible by 4. By dividing we can check. डिवाइड करके हमने चेक कर सकते हैं. देखो यहाँ पर मैंने 4 में डिवाइड किया. 4 1 जा 4 31 4 7 जा 28 3 38 4 9 जा 36 2 3 4 5 जा 20 3 4 4 8 जा 32. So this number is not divisible by 4. Are you clear? Yes, sir. तो 4 में कैसे टेस्ट करेंगे समझ में आया? टू टेस्ट पर 4 हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट 2 digits from right hand side. You take and divide by 4. Divide by 4. Okay. Now, divisibility test for 8. Divisibility test for 8. 7 1 0 6 1 2 8. I want to know this number is divisible by 8 or no? ये नंबर 8 में डिविजिबल है कि नहीं? हमने क्या करेंगे? 4 के लिए हमने क्या करते थे? 2 डिजिट लेते थे. क्या करते थे? 2 digits. पहले 2 digits from the right hand side. See here. In order to know this number is divisible by 8 or not, you have to take first 3 digits. First 3 digits. How about it is 128. Now you divide this 128 by 8. 8 1 जा 8. 4. 8 6 जा 14. So remainder is coming 0. Remainder is coming 0. Means this number is divisible by 8. So this number is divisible by 8. Are you clear? Yes, sir.
from the right. Are you all clear? Yes, sir. Okay. Now divisibility test for 7. Divisibility test for 7. यहाँ देखो ये काम अच्छे से divisibility test for 7. For 7. Now you see 9162. I want to know this number is divisible by 7 or not. 7 or Not. तो मैंने क्या करूंगा यहाँ पर ये तो पहला डिजिट है इसको अंडरलाइन करो क्या क्या मैंने अभी 2 है 2 है ना इसका डबल करना अच्छा 2 है रेस्ट बता कितना तुम्हारा 916 अभी ये 2 का डबल करो 2 का डबल कितना हुआ 4 कितना हुआ 4 ये रेस्ट दो नंबर है 916 इसमें हमने 4 माइनस करेंगे क्या करेंगे 4. माइनस करेंगे माइनस करने के बाद कितना आया 2. 1 912 आया Yes, sir. 912 आया कि नहीं Yes, sir. अभी 912 को मैंने 7 में डिवाइड करूंगा तो 2 तो यहाँ पर क्या हुआ रिमाइंडर इज कमिंग 2 रिमाइंडर इज कमिंग 2 remainder is coming 2 it means this number is not divisible by 7 this number is not divisible by 7. this number is not divisible by 7. because here the remainder is coming 2 remainder is coming 2 प्रोसेस समझ में आया Yes, sir. पहला डिजिट 1 प्लस डिजिट का डबल करना है बाकी जो रेस्ट नंबर रहेगा उसका लेफ्ट को उससे माइनस करना है